हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक 2025-26 की जो रिक्रूटमेंट है लोकल बैंकिंग ऑफिसर, उसके लिए बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस का टॉपिक 21 कवर कर रहे हैं, जो है कमर्शियल बैंकिंग एंड एनबीएफसी का। ठीक है, इसके पहले अपन ने 20 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे, वो भी वीडियोस आप देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और ये जो सीरीज है ये टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। वैसे देखिए, जनरल बैंकिंग इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसमें शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। 24 चैप्टर है, 265 टॉपिक्स है एंड 7000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपका बैंकिंग इकोनॉमी अवेयरनेस का जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस को रहता है, तो इसलिए जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं किया होगा, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि परचेस कर लीजिए ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि पीडीएफ से आपकी रिवीजन भी हो जाएंगे एंड सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कमर्शियल बैंकिंग एंड एनबीएफसी के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट क्रेडिट क्रिएशन, सेकंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, थर्ड इशूइंग करेंसी नोट एंड फोर्थ ग्रांटिंग लोन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, इशूइंग करेंसी नोट्स, मुद्रा नोट जारी करना, बिकॉज ओनली द आरबीआई इज ऑथोराइज्ड टू इशू करेंसी नोट, कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू देम। ओके, नेक्स्ट सेकंड, एनबीएफसी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग विच टाइप ऑफ डिपॉजिट? एनबीएफसी किस प्रकार की जमा स्वीकार नहीं कर सकते? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट डिमांड डिपॉजिट, सेकंड टर्म डिपॉजिट, थर्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, बिकॉज एनबीएफसी आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, थ्रू दे मे एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट विद आरबीआई अप्रूवल। ओके, नेक्स्ट थर्ड, which of the following ratio is regulated for bank under बेसल 3? बेसल 3 के तहत बैंकों के लिए कौन सा अनुपात नियमित है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, सेकंड डेप्ट इक्विटी रेशियो, थर्ड इक्विटी रेशियो एंड फोर्थ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, CAR, because CAR ensure that bank maintains sufficient capital to absorb potential financial losses. Okay, next fourth, which of the following is not considered a liability for a bank? इनमें से कौन सा बैंक की देयता नहीं है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट सेविंग डिपॉजिट, सेकंड फिक्स डिपॉजिट, थर्ड लोन गिवन टू कस्टमर एंड फोर्थ बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो करेक्ट आंसर है थर्ड लोन गिवन टू कस्टमर, ग्राहकों को दिए गए ऋण, बिकॉज लोन गिवन टू कस्टमर आर असेट्स फॉर द बैंक बिकॉज दे जनरेट फ्यूचर इनकम। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड फॉर एनबीएफसीज? एनबीएफसी के लिए निधियों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट इक्विटी कैपिटल, सेकंड बोरिंग फ्रॉम बैंक, थर्ड पब्लिक डिपॉजिट एंड फोर्थ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बैंकों से उधार, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ एनबीएफसी फंडिंग कम फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एन एनबीएफसी इन इंडिया? भारत में एनबीएफसी के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता क्या है? तो देखो, ऑप्शन है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़। तो करेक्ट आंसर है सेकंड 5 करोड़। आरबीआई मैंडेट दैट एनबीएफसी मस्ट हैव एटलीस्ट 5 करोड़ ऑफ नेट ओन फंड, एनओएफ। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी? निम्न में से कौन सा एनबीएफसी जमा स्वीकार नहीं करता? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सेकंड पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, थर्ड गोल्ड लोन एनबीएफसी एंड असेट फाइनेंस कंपनीज। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ असेट फाइनेंस कंपनी, परिसंपत्तिया वित्त कंपनी, बिकॉज असेट फाइनेंस कंपनीज फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ठीक है, मीनिंग दे कैन नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट एट, विच इज द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एनबीएफसी इन इंडिया? भारत में एनबीएफसी का मुख्य नियामक कौन है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट सेबी, आरबीआई,
IRDA and Ministry of Finance. तो करेक्ट आंसर है सेकंड RBI. RBI regulate NBFC under the Reserve Bank of India Act 1934. Next, ninth, what type of account cannot be open in NBFCs? NBFC में किस प्रकार का खाता नहीं खोला जा सकता? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फिक्स डिपॉजिट, सेकंड रिकरिंग डिपॉजिट, थर्ड करंट डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट. तो करेक्ट आंसर है थर्ड करंट डिपॉजिट, चालू खाता, बिकॉज करंट अकाउंट आर डिमांड डिपॉजिट एंड NBFC आर नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. ओके. नेक्स्ट, टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कमर्शियल बैंक असेट? निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कस्टमर डिपॉजिट. द करेक्ट आंसर है फोर्थ कस्टमर डिपॉजिट, ग्राहक जमा, बिकॉज कस्टमर डिपॉजिट रिप्रेजेंट लाइबिलिटी फॉर द बैंक बिकॉज दे मस्ट बी रीपेड टू कस्टमर. नेक्स्ट, 11th, which NBFC category primary finance automobiles, machinery और equipment? कौन सा NBFC मुख्य रूप से वाहन, मशीनरी या उपकरणों के लिए वित्त प्रदान करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट NBFC, सेकंड असेट फाइनेंस कंपनी, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एंड लोन कंपनी. तो करेक्ट आंसर है सेकंड asset finance company because it provide loan specifically for purchasing physical assets such as vehicle, machinery and equipment. Next, 12th, what is the main purpose of CRAR for bank? ठीक है, बैंकों के लिए CRAR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट टू रेगुलेट लिक्विडिटी, सेकंड टू डिटरमाइन प्रॉफिट मार्जिन, थर्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क एंड फोर्थ टू कैलकुलेट टैक्सेस. तो करेक्ट आंसर है थर्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क, ऋण जोखिम से सुरक्षा, बिकॉज CRAR इंश्योर बैंक हैव इनफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब लॉसेस फ्रॉम रिस्की असेट thereby reducing credit risk. Next, 13, which of the following NBFC can accept public deposit? निम्न में से कौन सा NBFC सार्वजनिक जमा स्वीकार कर सकता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, सेकंड डिपॉजिट टेकिंग NBFC, थर्ड पीयर टू पीयर NBFC एंड नॉन फाइनेंस NBFC. तो करेक्ट आंसर है सेकंड डिपॉजिट टेकिंग NBFC, जमा स्वीकार करने वाला NBFC, बिकॉज डिपॉजिट टेकिंग NBFC आर अलाउड टू एक्सेप्ट public deposit under the strict RBI guidelines. Next, 14, which instrument is not used by bank to raise short term fund? बैंकों द्वारा अल्पकालिक निधि जुटाने के लिए कौन सा साधन उपयोग नहीं किया जाता? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सेकंड कमर्शियल पेपर, थर्ड ट्रेजरी बिल एंड फोर्थ इक्विटी शेयर्स. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ इक्विटी शेयर्स, बिकॉज इक्विटी शेयर्स आर लॉन्ग टर्म कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, not short term funding tool. Okay. Next, 15, NBFC must maintain LCR, liquidity coverage ratio, if NBFC को LCR मीन्स तरलता कवरेज अनुपात बनाए रखना होता है यदि. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट दे एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, सेकंड दे लेंड्स ओनली टू द गवर्नमेंट, थर्ड दे ऑपरेट एज अ बैंक एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट दे एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, वे सार्वजनिक जमा स्वीकार करते हैं, बिकॉज ओनली डिपॉजिट टेकिंग NBFC आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन LCR सिमिलर टू बैंक टू एंश्योर लिक्विडिटी ड्यूरिंग स्ट्रेस. वैसे देखिए करंट अफेयर्स की PDF भी अवेलेबल है जनवरी टू नवंबर 2025 तक. ठीक है, जिनको भी PDF चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं. सभी MCQs इसमें कवर किए हैं, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, जितने भी कंटेंट दिए वो सभी के MCQs इसमें कवर किए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी कंबाइन है. ठीक है. नेक्स्ट, 16, विच टाइप ऑफ लोन इज जनरली नॉट गिवन बाय NBFC? कौन सा ऋण आमतौर पर NBFC द्वारा नहीं दिया जाता? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन एंड एग्रीकल्चर क्रॉप लोन. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ एग्रीकल्चर क्रॉप लोन, कृषि फसल ऋण, बिकॉज एग्रीकल्चर क्रॉप लोन आर प्राइमरी इशूड बाय कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, नॉट NBFCs. नेक्स्ट, 17, ड्यूअल रेगुलेशन इन NBFC रेफर्स टू. NBFC में द्विनियमन का अर्थ है. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट RBI एंड सेबी रेगुलेशन, सेकंड RBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेशन, थर्ड सेबी एंड IRDA रेगुलेशन एंड RBI एंड स्टॉक एक्सचेंज. करेक्ट आंसर है फर्स्ट
RBI and SEBI regulation, because RBI or SEBI का नियम, because some NBFC dealing with securities are regulated by both RBI and SEBI at the same time. Next, 18, which is a non-banking function of commercial bank? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाने वाला गैर बैंकिंग कार्य कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट क्रेडिट क्रिएशन, सेकंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, थर्ड लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज एंड फोर्थ ग्रांटिंग लोन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, जीवन बीमा सेवाएं, बिकॉज selling life insurance policy through subsidiaries or partnership is a non-banking service offered by many banks. Next, 19, what is true about NBFC in the secondary market? द्वितीयक बाजार में NBFC के बारे में क्या सत्य है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट NBFC कैन नॉट ट्रेड इन बॉन्ड, सेकंड NBFC कैन ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, थर्ड NBFC कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट, एंड फोर्थ NBFC कैन नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, NBFC कैन ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। NBFC सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं, बिकॉज NBFC आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड पार्टिसिपेट इन डेब्ट मार्केट विथ रेगुलेटरी लिमिट। ओके, नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ NBFC? निम्न में से कौन सा NBFC का प्रकार नहीं है? देखो ऑप्शन है, फर्स्ट असेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक कैन कैटेगराइज एज अ बैंक, नॉट NBFC, एंड आर रेगुलेटेड अंडर डिफरेंट लॉ। नेक्स्ट 21, which of these is the main risk for NBFC compared to commercial bank? वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में NBFC के लिए मुख्य जोखिम कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऋण जोखिम, तरलता जोखिम एंड बाजार जोखिम, बिकॉज NBFC फेस हायर क्रेडिट एंड लिक्विडिटी रिस्क बिकॉज they depend heavily on borrowing and cannot accept demand deposit. Next 22, which of the following is true about commercial banks CRR? वाणिज्यिक बैंकों के CRR के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट बैंक मेंटेन CRR with RBI, second can keep CRR with any bank, third CRR is optional, and fourth CRR include government securities। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मस्ट मेंटेन CRR विथ RBI। CRR को RBI के पास रखना अनिवार्य है, बिकॉज बैंक मस्ट मेंटेन CRR इन द फॉर्म ऑफ कैश विथ RBI, इट कैन नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर NBFC? निम्न में से कौन सा NBFC के लिए आय का स्रोत नहीं है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, सेकंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, थर्ड फ्री एंड कमीशन इनकम एंड फोर्थ करेंसी इशुएंस। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, करेंसी इशुएंस, मुद्रा जारी करना, बिकॉज NBFC कैन नॉट इशू करेंसी, देयर मेजर इनकम सोर्स आर इंटरेस्ट, फीस एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न। नेक्स्ट 24, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ NBFC टू सिंगल बोरोवर? एक उधारकर्ता को NBFC द्वारा अधिकतम कितना एक्सपोजर दिया जा सकता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट 10% of own fund, 15% of own fund, 20% of own fund and 25। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 20% of own fund, स्वामित्व निधियों का 20%, बिकॉज RBI restrict NBFC from lending more than 20% of their own fund to a single borrower to reduce concentration risk. Okay, next 25, which point distinguish NBFC from bank? कौन सा बिंदु NBFC को बैंकों से अलग करता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट NBFC कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, सेकंड NBFC कैन नॉट इशू चेक, थर्ड NBFC कैन इशू करेंसी एंड फोर्थ NBFC आर पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, NBFC कैन नॉट इशू चेक। NBFC चेक जारी नहीं कर सकते, बिकॉज it cannot issue check drawn on themselves and not a part of payment and settlement system unlike bank. Okay, वैसे देखिए
बैंकिंग इकोनॉमी की करंट अफेयर्स पीडीएफ भी अवेलेबल है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स एंड आरबीआई सर्कुलर एंड बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस वन लाइनर जो जनवरी टू नवंबर से अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।